Dear students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear students, today we have to discuss about the electric potential. I just am discuss कंदासीं about electric potential. Electric potential discuss करने का पहले असां कुछ concept वठूं potential energy हो, because this is some related to the potential energy. So here we have to also discuss about the electrical potential energy, just potential energy and electric potential. Okay. અને અસાं potential energy जो concept आहे असां जो potential energy उन energy खे चयो वेंदो आहे जेको ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट करे गेन करे उहा एनर्जी जेका हूंदी आहे छा हूंदी आहे असां वटि potential energy ना suppose कि assume that my hand is considered as a earth ये जेको मुंहिंजो हथ आहे suppose कि छा आहे हिकिड़ी अर्थ आहे इन अर्थ ते असां हिकु ऑब्जेक्ट रखियो आहे now we have to push this object or we have to pull this object against the field of earth इन असां ऑब्जेक्ट खे इन सरफेस ऑफ अर्थ जे अगेंस्ट मूव कराईंदासीं जेका ग्रेविटेशनल फील्ड आहे उन जे अगेंस्ट मूव कराईंदासीं लेट्स सपोज we are going to lifting up this marker. Now this mass is going to upward. Now this mass is getting a lot of energy. This mass is getting quantity of energy. That quantity is named as a potential energy. ये जगह energy gain पे करे object के height दे इन energy के जो this is a potential energy. So now it means this potential is also related to a some field. जी ये energy object gain पे करे as compared to field. Same way सां हिते भी असां वटि जेका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आहे दिस इज विथ रिलेटेड टू द फील्ड ई फील्ड सां रिलेटेड आहे असां ओके सो असां प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ियोसीं जेका इलेक्ट्रिक फील्ड आहे is force experienced by the test charge असां ये शइ पढ़ीसीं असां अगर पढ़ंदा इलेक्ट्रिक फील्ड on the basis of force that field is named as electric field intensity और जितना electric field intensity असां ही concept discuss कयो होसीं electric field intensity is equal to kq upon me or square but here we have to focus on this formula okay अगर असां field के study कयो on the basis of force that field is named as electric field intensity अगर असां फील्ड के स्टडी कयूं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी दैट फील्ड इज नेम्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर असां के फील्ड स्टडी कयूं फोर्स के बेसिस ते तो असां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर असां के फील्ड स्टडी कयूं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी दैट इज एक्चुअली अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओके लेट्स सपोज कयो असां वटि हिकिड़ी पॉइंट चार्ज आहे दिस इज अ पॉइंट चार्ज ओके and here we have a test charge and this is a test charge of positive with small mass and असां के थोड़ी टेस्ट चार्ज के बारे में मालूमात हुअण घुर्जे टेस्ट चार्ज आहे छा ये टेस्ट चार्ज हिकु अहिड़ी चार्ज आहे जेका पंहिंजी फील्ड क्रिएट कोन कंदी आहे ऐं जेका फील्ड हूंदी आहे अदर चार्जिस चाहे उहा सम पॉइंट चार्ज आहे या एनी अदर चार्ज आहे उन चार्ज जी फील्ड मेयर कंदी आहे इट मीन्स दिस टेस्ट चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल for the measurement of field of other charges and this is a such charge which cannot create its own field ये एडी चार्ज है जेका पांजी फील्ड क्रिएट कोन करना because this is very small इन जेका क्वांटिटी ऑफ मास ने अच्छा होंदी very small होंदी ओके आणि ही जेका चार्ज आसन पॉजिटिव इन पांचो तारी फील्ड क्रिएट कई होंदी इन चार्ज जो तारी पाने फील्ड क्रिएट कई होंदी तो असां पढ़ूं पिया जॾहिं हे चार्ज टेस्ट चार्ज हिन पॉइंट चारी क्लोज पिया खणी अचूं प्रीवियस कॉन्सेप्ट वरी रिकॉल कयूं त जॾहिं असां हिन चार्ज खे हिन करीब पिया खणी अचूं हिन ते फोर्स पियो लॻे जॾहिं असां फील्ड खे इन टर्म्स ऑफ फोर्स पिया स्टडी कयूं जॾहिं असां हिन फील्ड खे इन टर्म्स ऑफ फोर्स पिया स्टडी कयूं दैट वाज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐं सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कयूं अगर असां हिन चार्ज खे हिन जे करीब खणी वेंदासीं it will gain energy this obtain energy असां हिन छा कंदासीं जॾहिं हिन चार्ज क्लोज करे वेंदासीं त हिन ते कुझु न कुझु क्वांटिटी ऑफ फोर्स लॻंदी श्योरली लॻंदी पर असां हिन फील्ड खे डिस्कस था कयूं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी जॾहिं एनर्जी जे बेसिस ते डिस्कस कंदासीं त हिन खे असां चवंदा दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाणे एनर्जी कहिड़ी
एनर्जी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल आहिनि उहा इलेक्ट्रिकल आहे या पोटेंशियल आहिनि या व्हाट्सएवर कहिड़ी एनर्जी आहे असांखे हिते उहा डिस्कस करणु हिते असां फोकस करणो आहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सो लेट्स स्टार्ट जॾहिं असां हिन चार्ज खे हिन करीब खणींदासीं त इहा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गेन कंदी some amount of energy will be stored in this इन में कुछ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी स्टोर थींदी थी और ये जेका एनर्जी आहे एनर्जी की चवंदा दिस इज पोटेंशियल एनर्जी और ॾिसो हाणे असां ना अगेंस्ट या पॉजिटिव चार्ज आहे या पॉजिटिव चार्ज आहे ऐं ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे जॾहिं हिकु ॿिए सेम चार्जिस आहिनि हिकु ॿिए क्लोज ईंदियूं हिकु ॿिए खे रिपेल पर असांखे रिपेल न आहे करणो असांखे फील्ड जी मेजरमेंट वठणी आहे जॾहिं फील्ड जी मेजरमेंट वठणी पवे ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे वर्क डन करणो पवंदो जॾहिं वर्क डन कंदासीं असां अगेंस्ट द फील्ड when we have to work done against the field it will gain some quantity of energy जॾहिं असां हिन चार्ज खे अगेंस्ट वठी वेंदासीं त हीअ कुझु क्वांटिटी ऑफ वर्क कंदी ऐं कुझु क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गेन कंदी because we are going to against the field this is positive and that energy gained by this charge is called electric potential energy okay so we can say that potential energy is directly proportional to test charge potential energy is directly proportional to test charge जीअं असां हिन टेस्ट चार्ज जी क्वांटिटी इंक्रीज कंदा वेंदासीं त असां जेका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फील्ड में उहा ज़्यादा स्टोर थींदी वेंदी ओके ऐं हिते बि हिकु पॉइंट फोकस कयो पोटेंशियल एनर्जी जो डायरेक्ट रिलेशन आहे टेस्ट चार्ज सां देयर मस्ट बी अ सिंगल वन प्रॉपर्टी व्हिच मस्ट बी कांस्टेंट इन जो रिलेशन डायरेक्ट वेरी तॾहिं थो करे जॾहिं असां हिते हिकु शइ खे कांस्टेंट रखूं ये रिलेशन तॾहिं असां वटि एक्सेप्टेबल आहे जॾहिं हिकु शइ कांस्टेंट हुजे उहा जेका शइ कांस्टेंट हूंदी आहे उहा प्रॉपर्टी हूंदी आहे फील्ड जी और फील्ड जी प्रॉपर्टी जॾहिं कांस्टेंट हूंदी आहे तॾहिं हीअ रिलेशन सां छा हूंदो एक्सेप्टेबल हूंदो आहे ओके दिस इज एक्सेप्टेबल व्हेन property of field is constant property of field is constant a relation तने acceptable आहे जॾहिं field की property छा हुजे असां वटि constant which is field property field की कहिड़ी property आहे this is actually potential the field property is actually potential so here we can write potential energy is equal to by replacing this proportionality we will show a constant or property of field which is potential into q naught so this is actually potential energy gained by the test charge इते फोकस करणो असांखे हिन ॻाल्हि में त हीअ जेका पोटेंशियल एनर्जी आहे एक्चुअली गेन केरु थो करे हीअ पॉइंट चार्ज थी गेन करे या असां वटि इहा टेस्ट चार्ज थी गेन करे गेन कहिड़ी थी करे त हीअ जेका असां वटि पोटेंशियल एनर्जी आहे इहा गेन कई आहे असां वटि टेस्ट चार्ज छो हाणे असां वटि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली जंहिं असां ग्रेविटेशन में वरितोसीं त जॾहिं असां ऑब्जेक्ट वर्क कंदा कयूं फील्ड अगेंस्ट था वञूं त उन ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर थी थिए इट मीन्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू वर्क जे ऑब्जेक्ट असां वर्क था कयूं उहो ऑब्जेक्ट गेन कंदो एनर्जी सेम वे असां हिन चार्ज ते पिया वर्क कयूं सो हिन चार्ज ते वर्क कयूं हीअ जेका एनर्जी आहे गेन करण वारी केरु आहे असां वटि टेस्ट चार्ज आहे नॉट अ पॉइंट चार्ज कोन्हे टेस्ट चार्ज आहे जेका असां वटि एनर्जी खे गेन कंदी ओके so if we want to find out what is potential then what will be so potential will becomes equal to potential energy divided by test charge potential energy divided by test charge potential energy के divide क्यों test charge सां त असां छा मिली वेंदो potential मिली वेंदो ओके हीअं हाणे हिन जो मतिलबु आहे त अगरि असां हिते पोटेंशियल एनर्जी खे इंक्रीज करणु चाहियूं था त असांखे टेस्ट चार्ज जी क्वांटिटी इंक्रीज करणी पवंदी इफ वी वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देन वी हैव टू इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ टेस्ट चार्ज अगरि असां टेस्ट चार्ज खे डबल था करे छॾियूं त जेका एनर्जी स्टोर्ड आहे हिन फील्ड जे अंदरि उहा डबल थी वेंदी आहे अगरि असां 3 टाइम्स इंक्रीज था कयूं त ऑटोमेटिकली जेका पोटेंशियल एनर्जी आहे उहा बि 3 times increase थी वेंदी दिस इज एक्चुअली रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टेस्ट चार्ज
Now we have to focus on this formula. The formula ने छा बताए the formula सां define तो करे त जेका potential energy and जेका test charge जेको ratio आ this is actually a electric potential. This is actually a electric potential. And electric potential कीअं मालूम थींदो असांखे जॾहिं पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड कंदा आहियूं टेस्ट चार्ज सां. अच्छा अगर असां टेस्ट चार्ज खे डिक्रीज कयूं छा पोटेंशियल ते इफेक्ट पवंदो? इज देयर एन इफेक्ट? छा कोई इफेक्ट पवंदो हिते? अगर असां टेस्ट चार्ज खे डिक्रीज कयूं त पोटेंशियल ते छा इफेक्ट पवंदो? here we have to focus on that point. अगर असां पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कयूं त पोटेंशियल ते छा इफेक्ट पवंदो इन शइ ते फोकस करणो असांखे. ओके हाणे अगर असां चऊं था टेस्ट चार्ज जेका क्वांटिटी आहे उहा डिक्रीज था कयूं then what will be potential? Option A increase, option B decrease, option C both decrease as well as increase, option D none of these, option E remain unchanged. So surely option E is correct one. By changing quantity of test charge there is no any effect on the potential, because when we are going to change this test charge quantity of test charge so potential energy will also change. अगर असां हिन quantity of charge खे change कंदासीं त हिन खे change करण सां गॾोगॾु असां जेका potential energy आहे this will also change. अगर हुन खे डबल थो कयां त ऑटोमेटिकली डबल थींदी. अगर मां हिन खे ट्रिपल थो कयां त पोटेंशियल एनर्जी ट्रिपल थींदी. और ट्रिपल ट्रिपल में हिक ॿिए कैंसिल कंदा पोटेंशियल जे सिहत ते कोई असर कोन पवंदो. पोटेंशियल असां छा रहंदो सेम रहंदो असां. ओके फोकस हिन यूनिट ते पोटेंशियल यूनिट छा आहे एनर्जी यूनिट आहे जूल charge unit of coulomb. Joule upon coulomb is actually equal to unit of electric potential and its unit is about we can say this is also equal to 1 volt. नहीं ना चाहिए समय 1 volt के बराबर. This is equal actually 1 volt. અને 1 volt છે ऐसा માટે अगर असां के चार्ज थे अगर असां 1 कूलम चार्ज ते सिंगल 1 कूलम चार्ज ते 1 जूल वर्क डन कयूं त वो जेको वर्क डन आहे दिस इज एक्चुअली 1 वोल्ट. उन चवंदा 1 वोल्ट. अने चार्ज केड़ी आहे एक जूल वर्क डन कयो वने एक सिंगल 1 कूलम चार्ज ते उहा जेका असां वटि एनर्जी स्टोर थी आहे वो जेको वर्क डन थियो आहे दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1 वोल्ट. नाउ this is what charge or kd charge which is charge at which we are going to work done. This is a test charge in our work done के test charge are somewhat what test charge है मना जिको सामने volt define हो गए on the basis of test charge on the test charge. This is not a point charge. ये point charge कौन है का ये साम test charge है इन test charge दे कुछ जोल वर्क कयो वने अगर असां ये एक कूलम हो जे त इन के समझना this is actually equal to 1 volt या 1 volt ये बराबर होंगे आसान. ओके लेट्स स्टार्ट. અને हम विषय पे फोकस क्यों द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में फर्क केड़ो चाहे बे गाल सेम आइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहे गाल सेम आइन एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. these are two different things. ये अलग शयूं आइन these are not same things. ये अलग आइन because electric potential is equal to joule upon coulomb. electric potential जो यूनिट होता है joule upon coulomb आ and electrical potential energy जो यूनिट आ वो just joule आ. this is actually just single one joule वो joule आ असां electric potential छा है joule upon coulomb आ. तो इन कंफ्यूजन में तव्हां के ना रहणो त असां वटि जेका electric potential energy आ ऐं जो electric potential आ ये सेम शयूं आहिनि. ये सेम शयूं बिल्कुलु न हरगिज़ न. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट आहे जूल अपॉन कूलम. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यूनिट छा आहे उहा जस्ट जूल. ओके सो हाणे असां फोकस था कुछ एमसीक्यूज़ ते जेका असां डिस्कस कयासीं कुछ मिनट हाणे इन डिस्कशन में जेके रिजल्ट मिला असां उन रिजल्ट ते फोकस कंदासीं. ओके इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज़. ओके फोकस ऑन दिस पॉइंट. ये रिमूव द okay dear students now we have to focus on the
MCQs based on this discussion. Yeah, just on the verbally with happening note again in terms of options. If electric field is measured, if electric field is measured on the basis of force, then this will become equal to option A, electric potential, option B, electric potential energy, option C, electric field intensity, option C, none of these. केवल ऑप्शन सही है. अगर हम फील्ड के स्टडी के on the basis of force, then what will be? Starting option A, electric potential, option B, electric potential energy, option C, electric field intensity, electric field intensity, option D, none of these. केवल ऑप्शन सही है. So surely once I am going to repeat again. If electric field is measured on the basis of force, then this will become equal to option A, electric potential energy, electric field intensity, option C, D, none of these. Good option सही है. So surely yes, C option is correct one. अगर हम फील्ड के स्टडी किए on the basis of force, then this is equal to electric field intensity. If we study field on the basis of energy, अगर हम फील्ड के स्टडी किए on the basis of energy, then this will become equal to what? Option A, option B, option C, option D. Option A is equal to electric potential. Option B, electric potential energy, same options. Electric potential energy. Option C, electric field intensity. Option D, none of this. Option केवल सही है समझ. अगर हम फील्ड के स्टडी किया on the basis of energy, अगर हम फील्ड के स्टडी on the basis of energy, then which one will be correct option? So correct option will be A. अगर हम फील्ड के एनर्जी बुनियाद ते स्टडी कंदासीं त उहा जेका हूंदी असां वटि हूंदी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अगर तव्हां फील्ड के फोर्स ऐं बेसिस ते स्टडी कंदा आहियो छा हूंदी असां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, so note this MCQs, these are most important conceptual MCQs. okay, ऐं असां हाणे हिन फॉर्मूला ते कुझु MCQs डिस्कस कयूं त असां वटि जेका टेस्ट चार्ज आहिनि इहे वेरी करण सां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ते कहिड़ो इफेक्ट पवंदो. हाणे बि फोकस कंदासीं हिन फॉर्मूला ते. हिन फॉर्मूला बेसिस ते कुझु MCQs टाइप कंदासीं. Now MCQs that if we vary the quantity of test charge, then what will be effect on the potential? What will be effect on electric potential? अगर असां इन टेस्ट चार्ज की क्वांटिटी के वेरी कयूं, इंक्रीज कयूं, डिक्रीज कयूं, एक्चुअली इट मींस उन जेका स्टेट आहे उन स्टेट खे डिस्टर्ब कयूं. अगर 2 त 4 कयूं, 2 त या 1 कयूं, माना जेका स्टेट आहे उन छा कयूं डिस्टर्ब कयूं, जेका क्वांटिटी ऑफ चार्ज छा कयूं असां वेरी कयूं, चेंज कयूं, then what will be effect on electric potential? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ते कोई इफेक्ट कोन पवंदो. छो? अगर हम टेस्ट चार्ज कंदुमि डबल त उन सां गॾु पोटेंशियल में डबल थींदी. छो? रिलेशन सां डिफाइन थो करे त डायरेक्ट रिलेशन रिलेटेड आहिनि ॿिए सां. अगर हाणे यूज़ कयूं डबल त उन सां गॾु हीअ थींदी डबल. जॾहिं हीअ डबल थींदी डबल डबल हिक ॿिए कैंसिल करे छॾींदा, माना कोई इफेक्ट कोन्हे को. अगर मां पोटेंशियल में डबल करणु चाहियां थो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मूंखे हीअ डबल करणु पवंदी टेस्ट चार्ज. सो हिननि खे चेंज करण सां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ते कोई असर कोन पवंदो. फोकस ये पॉइंट्स नोट पियो कयांव. Point number 1, by changing the quantity of test charge, there will be no any effect on electric potential.
because electric potential is independent of test charge. Independent of test charge. Electric potential charge का independent है. Okay. So this is the most important point. So point के mind में रखी चलिए. અને असां जॾहिं चार्ज करे फील्ड अगेंस्ट था मूव था करायूं त हिन चार्ज ते अॻियां असां वर्क डन त हिते जेका पोटेंशियल एनर्जी हूंदी आहे उहा एक्चुअली बराबर हूंदी आहे असां वर्क डन जे दिस पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू वर्क डन ओके ऐं ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे जॾहिं तव्हां वर्क कंदा कयूं त वर्क डन करण सां हिन पोटेंशियल में चेंजिंग ईंदी सो असां लिखी सघूं था हिनखे डेल्टा वी is equal delta potential energy upon में टेस्ट चार्ज अगर असां वर्क डन ना कितना पोटेंशियल में तब्दीली अचे त पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली अचण सां गॾो ज़ाहिरी ॻाल्हि हुन पोटेंशियल डिफरेंस में तब्दीली ईंदी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तब्दीली ईंदी पोइ लिखंदा आहिनि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू डेल्टा पी ई अपॉन में क्यू नॉट ओके तो हिन खे आउं रिप्लेस करे सघां थो इक्वल टू वर्क डन ओके so delta v is equal to work upon में टेस्ट चार्ज वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज अगर असां क्वांटिटी ऑफ वर्क खे मालूम करणु चाहियूं त छा थींदो सो वर्क विल बिकम्स इक्वल टू डेल्टा v मल्टीप्लाई टेस्ट चार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड प्रोडक्ट विथ टेस्ट चार्ज इज एक्चुअली इक्वल टू वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज जेको वर्क डन कयो टेस्ट चार्ज ते वर्क डन कयो वियो तो असां चई सघूं था त हिन पोटेंशियल डिफरेंस खे वेरी करण सां हिन जे वर्क ते इफेक्ट पवंदो हिन जे वर्क ते इफेक्ट पवंदो सो हिते एमसीक्यू ते ईंदो आहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिकल एनालॉगस ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिकली एनालॉगस ऑफ ऑप्शन ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर ऑप्शन डी just heat capacity can join analogous this is actually analogous of temperature c option is correct जो तो जे असां टेम्परेचर खे तब्दील कंदा आहियूं वेरी कंदा आहियूं टेम्परेचर में जॾहिं डिफरेंस क्रिएट थींदो आहे त उतां हीट जो फ्लो थींदो आहे हॉट बॉडी खां लो बॉडी ते हीट जो फ्लो थींदो आहे सेम में था जॾहिं हिते पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट थींदो आहे त हिते थींदो आहे वर्क डन पोइ हिन ते एमसीक्यू में अची सघे थो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एनालॉगस ऑफ temperature heat capacity specific heat capacity option D none of this के जो इलेक्ट्रिकल एनालॉगस है सो टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल एनालॉगस छो टेम्परेचर के वेरी करण सां हीट जो फ्लो थींदो आहे हिते असां पोटेंशियल डिफरेंस के वेरी करण सां वर्क डन थींदो आहे ओके सो दिस विल बी अबाउट टुडेस लेक्चर्स सो जेके असां लेक्चर पसंद आयो आहे सो असां चैनल खे सब्सक्राइब करें दोस्तों सां शेयर करें ओके वी आर टिल वी नेक्स्ट मीट अगेन